ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। कोल्ड चेन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जो फैसले लिए, जिस प्रकार भारत ने तेजी से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। भारत आज उन देशों में है जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर
कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। विकसित देशों, अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की तुलना में भी भारत ने इस लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से लड़ा है और अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान बचाई है। हम भारतीयों का संयम, हम भारतीयों का साहस, हम भारतीयों का सामर्थ्य इस पूरी लड़ाई के दौरान अतुलनीय रहा है, अभूतपूर्व रहा है। हमने सिर्फ अपने ही नागरिकों की चिंता नहीं की, बल्कि हमारे देशों के नागरिकों को भी बचाने का हर प्रयास, अन्य देशों के साथ मदद करने का भी काम, हर संभव प्रयास किया गया। साथियों, फरवरी मार्च की आशंकाओं भरे, डर भरे माहौल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों भरे वातावरण के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं, तो वही जनभागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है। आप सभी अनुभवी साथियों के सुझाव भी समय समय पर भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है, तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है। और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। देश ने अब तक जो प्राप्त किया है, किसी भी तरह की लापरवाही उसे नुकसान पहुंचा सकती है। मैं सभी राजनीतिक दलों के महानुभावों से आग्रह करूंगा, हर एक को आज बोलने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप लिखित भेजिए। आपके सुझाव बहुत काम आएंगे, आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और योजना में वो भी बहुत पूरक होंगे। इन सभी आग्रह के साथ मैं आज आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। That was the Indian Prime Minister Narendra Modi holding an all-party virtual meeting with floor leaders of all the political parties of the Lok Sabha and Rajya Sabha to discuss the very important COVID-19 situation in the country, as well as a crucial subject that has made headlines in the last few days, which is vaccine development and deployment. As we all know, the big challenges that face all governments is the deployment and the logistics that are involved in the distribution of vaccines, and the Indian Prime Minister assured us that plans were in the offing and all cold chain logistics that were needed to distribute and store vaccines were being planned effectively and efficiently. He also spoke of a software that was designed to see storage and vaccine availability at all times going forward in real time, which is very crucial in the deployment process. He also mentioned the high rates of testing for the infection in India, along with the high recovery rate, which offers hope. He also said that while last year began in an environment of gloom and doom, we are now in a situation of hope as a vaccine against this infection finally becomes a reality. There are 8 vaccines that are in the pipeline in India as of now, and a plan
are underway to ensure proper deployment. Cold chain logistics are being planned as we speak. And the Prime Minister addressed different state governments and even invited written suggestions from different leaders for deployment of vaccines in different states in the country to tackle the infection. The Indian Prime Minister also spoke about a software that was being designed in India to see the real-time updates when it comes to storage of vaccines that will be deployed as well as availability going forward in the next year. This was a virtual meeting that was held today between the Indian Prime Minister Narendra Modi with different floor leaders of different political parties. And the topic of discussion, of course, was vaccine deployment. Remember, in the last few days, different countries have already pre-ordered doses of different vaccines being developed by pharma giants like Moderna, Pfizer being the top two coming into the mind. And of course, Oxford and AstraZeneca's vaccine against the infection is also an important front runner. India has also ordered several billion doses of the same. And that is what the Prime Minister was discussing before the floor readers today. And he mentioned that a software in particular has been designed to ensure that Indians stay up to date with real-time information when it comes to the logistics, especially cold chain logistics, which remains a huge challenge for the deployment of the vaccines, since some of these vaccines need to be stored at temperatures as low as minus 70 degrees Celsius, which remains a huge challenge for a country, especially in India. But the Indian Prime Minister assured all the citizens that plans were being made to make sure that all cold chain logistics are in place. He mentioned that there are 8 vaccines, I repeat, there are 8 vaccines that are currently in development for deployment in India against the infection, that is COVID-19, and priority will be given to healthcare workers. This was an all-party meet to discuss vaccine development, which remains a crucial subject as different front-runners claim almost about 95% efficacy against this infection. Remember, the Britain became the first country to approve the vaccine, the Pfizer vaccine against coronavirus. The US is expected to follow soon. India's Prime Minister Narendra Modi did chair an all-party meeting to discuss the coronavirus situation in the country, and the government called an all-party meeting to discuss the situation. And the top topic of discussion was vaccine deployment and the logistics that are needed, which the Prime Minister assured were being planned effectively and efficiently. The Prime Minister said that the centre is in talks with state governments over the price of the vaccine. Affordability of the vaccine is an important point in its deployment. Another important question that the Prime Minister answered was who would get the vaccine first, and that would be frontline workers and the elderly, the population that is most vulnerable to suffer some of the worst symptoms from this infections. Experts believe that this vaccine will be ready in the next few weeks. The Prime Minister also said that as soon as scientists give a green signal, vaccination and inoculation will start across the country, with priority being given to frontline workers and healthcare workers, of course. Right. Now, it is also important to note that while the Prime Minister did say that a scenario of hope seems to be in the offing as a vaccine against this deadly infection becomes a reality, he did urge all Indians to take precautions and continue wearing masks going forward, and social distancing is a must going forward as we prepare to go into 2021. While he did say that the vaccine will be ready in the next few weeks, he also gave a caution that our biggest weapons against this disease remain social distancing and the wearing of face masks whenever we are in public. That was the Indian Prime Minister holding an all-party virtual meeting. And the goal of this meeting was to assure all Indians that India had a solid, efficient vaccine deployment plan in place. And the biggest concern, which is the cold chain logistics which are needed to distribute and store a vaccine against COVID-19, were planned efficiently. Another highlight of his address was that he mentioned that a software had been designed in India which would offer real-time updates about the availability of different doses of the vaccine along with the storage, so that both manufacturers, distributors, as well as those that are using the vaccine
have all the updates at hand in real time. He also offered hope by saying that the rate of testing in India was very high and the recovery rate from this infection is especially high in India. There are currently 8 vaccines in the pipeline for the Indian population. And yet he said that it is very important. He also said that it is very important to practice social distancing at all times and wear face masks, since they will always remain our biggest weapons against this infection. Now, the phase 3 clinical trials of India's indigenous coronavirus vaccine, Covaxin, began last month, and it remains the largest clinical trial conducted for a coronavirus vaccine in India. Based on these trials, the approval will be granted after the assessment of the vaccine's safety and effectiveness. Now, the director of one of India's top medical institutes and members of the country's COVID task force, that is Dr. Randeep Guleria, is hopeful that by the end of December or early next month, India will approve an Indian vaccine for emergency use. Remember, Britain was the first country to approve a vaccine against the disease. The US is expected to follow. And the Indian Prime Minister offered a ray of hope just now by saying that a vaccine was in the offing soon and could be deployed in early next year or even this month itself. He said that India will not have to wait too long for a vaccine against coronavirus. But it is important to note that the vaccine will not be available in sufficient doses to give to everyone. And now that we have a tentative answer to when India expects to get a vaccine, the next question, of course, is that who will get the vaccine shots first? The Prime Minister did indicate that frontline workers as well as the elderly, that is the population that is most vulnerable to this infection, will get the vaccine first and will be priority when it comes to deployment and inoculation. The Prime Minister also invited written suggestions from different state governments and their leaders for plans for deployment across different states in the country. The Prime Minister and State Chief Ministers also discussed a tentative prioritization for vaccination last month. And the first category to get the shots of the vaccine remains healthcare and frontline workers who are battling this disease, doctors and nurses, as well as the second category would include police personnel, armed forces, as well as municipal workers. And the third category is estimated to be people who are over the age of 50 or those with comorbidities. More groups, of course, will be added to this inoculation plan eventually. And India expects that the vaccination process will span over about a year. Senior government officials have been reported saying that India may not need to vaccinate all of its 1.3 billion people, and if the country manages to inoculate a certain critical mass and break the transmission of the virus, then it may not need to vaccinate the entire population.